Imagine one of the largest glacial lake, about the size of 247 football fields, on top of a mountain range in the Indian Himalayan region breaks open its barriers, leading to catastrophic disaster downstream and impacting the entire ecosystem on its way. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to TFJ Studio. Today we take you on a journey of the danger looming in the Indian Himalayan region, with about 7,500 such lakes and 190 of them classified as high risk. We are talking about Pan Lake, situated in the northwestern Himalayas in the state of HP, which can be a cause of significant disruption in the region. This insidious danger is constantly lurking upon us as we live through this age of global warming and climate change. We interviewed several experts, environmentalists and scientists in a climate conference that happened recently in Shimla, the state capital of HP. Let's see what they had to say. आज मैं सुनता हूँ पूरे हिमालयी क्षेत्र में कि लगभग 50% से ज़्यादा जल स्रोत जो है वो या तो सूख गए हैं पूर्ण रूप से या सूखने की कगार पे हैं. Climate change is the social question of the 21st century. क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है अब आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो. कार्बन एमिशंस, राइज इन टेम्परेचर, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिमालयाज मोस्ट वल्नरेबल जोन है कोस्टल इन इंडिया के साथ साथ. There are urban floods in urban areas, droughts in rural areas, agricultural economy, which is mostly the backbone of our country, is getting impacted. How do we dig into it? How do we build into it? How do we protect the forests? And how much of the forests hold versus how much of load the built up environment holds in the city? What we need to understand is that whether that building typology is resilient enough to withstand the changes of climate impact. Cycling, I think, is one of the safest and one of the most environment-friendly activity that we can pursue in the Indian Himalayas. But this problem especially amplifies when we talk about the Indian Himalayan ranges. Climate change and global warming, it is here and we have to accept it कि ये यहाँ रहेगा. ये बहुत अहम मुद्दा बन चुका है आज की डेट में. We asked artificial intelligence several research questions which could help us analyze the threat we are living in, and here is the outcome of the answers we received. Here we can observe that the Himalayan glacier melt has doubled in the last 2 decades from 4 billion tons to 8 billion tons and is likely to impact 1.9 billion humans directly by glacial ice thinning. This will have a significant impact on rising sea levels. Here you can see that AI has identified 15-20% loss of glacier in the last 30 years and 4 very crucial impacts of unsustainable tourism on the Himalayan ecosystem. First, we see water diminishing by double in 2030 and 2050, then we see the frequency of glacial lake outbreak of floods increasing to serious levels and biodiversity loss decreasing to serious levels, which has a retrospective impact on resident migration and tourists' arrivals in the IHR in that time period. In a recent report, we found that in the high-risk glacial lakes around the Himalayan ecosystem, maximum were in HP. We could also identify the current and future GLOF hazard predictions in high and very high danger zones shown in red and orange in HP. 66.52% of geographical area is under forest cover, with a population of 3,000 musk deers, 700 Himalayan brown bears and only 60 snow leopards are resident of the hotspots for high-risk GLOF prone areas. We also have 350 different avian bird species living in our vicinity and approximately 2,000 different medicinal plants, all of which are at risk. We also have 1,429.4 square kilometers of national parks and 10,635 square kilometers of wildlife sanctuaries, which of course need further expansion. आमतौर पर ग्लाफ्स पे जब बात होती है, ग्लेशियर्स सिकुड़ने लगते हैं, तो सिकुड़ने के साथ साथ वो टूटने भी लगते हैं, क्योंकि हर जगह ग्लेशियर की सतह जो है एक ही मोटाई की नहीं होती. कुछ हिस्से मोटे हैं, कुछ पतले हैं, और इसलिए
जो पतले हिस्से होते हैं वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट करते हैं और वहाँ पर एक तालाब या झील बन जाती है। धीरे धीरे जो पानी बढ़ता है झील में, उसका प्रेशर दीवारों पे बढ़ता है और उसके टूटने की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है हमारे लिए। रिसर्चर्स का वो ज़्यादातर इसी पे केंद्रित है कि इन झीलों से कैसे बचा जाए, कि हम झीलों को कैसे छोटे से दरार कर दें या छेद कर दें ताकि वो पानी निकल जाए। ये ग्लेशियर तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ तक जाना ही मुश्किल है, मशीनें तो पहुँच ही नहीं सकती। इसलिए मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि हम वहाँ पर ध्यान दें जहाँ झील है, हमें नीचे घाटियों में ध्यान देना चाहिए जहाँ पर इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और लोगों की बसातें हैं, शहर हैं, गांव हैं, खेती है। पहली ज़रूरत ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हटाया जाए वहाँ से। दूसरी बात उठती है हिमालय के इलाके में हमारी जो बड़ी बड़ी बसाहतें हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो शायद हम लोग बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। It's the responsibility of the whole world to fix the effects climate changes causes in the whole world, but especially, of course, in the mountain regions worldwide, to vulnerable groups, and especially to HP, that there is not enough action taken place so far worldwide. I think we need a new alliance of climate action to fight the effects of climate change and to have really a partnership where people working together, changing and preventing what we have already seen. From my point of view, it's not 2 minutes before 12, it's 5 minutes after. It's stunning how many people are working to, preserve and deal with this issue. But I think we need more action, especially from governments to governments, from federal level to the state level. So we have to take into account everything. Everyone has to be a partner, because otherwise we will lose this beautiful region and this wonderful globe, because there is only one world and it's our responsibility to preserve it. क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है अब आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो, लेकिन सारी चीज़ें इसमें जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है उसके साथ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इन्वायरमेंट भी हमारा ख़राब हो रहा है। तो एक कैरिंग कैपेसिटी हमारी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था उसमें, कि आप कैरिंग कैपेसिटी हमारे, क्योंकि शहरों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बहुत है। मेरा इसमें अपना एक्सपीरियंस ये था कि हमको रूरल इकोनॉमी पे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि शहरी इलाके में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मैंने पाया है कि आपका एक डेवलप्ड एरिया आता है, दूसरा एक बिल्कुल नॉन डेवलप्ड, जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं। स्लम एरिया में बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशंस होती है, जहाँ पर आपके सीवरेज सिस्टम से लेके पानी के पीने के लिए पानी से लेकर कुछ भी नहीं है। तो एक वो अलग एरिया है, उसकी अलग दुनिया है, वो हमारे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग है वो, बहुत ज़्यादा इसमें अर्बनाइजेशन। अगर मेरा ये कहना है कि अगर आपको 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी अगर आपको गांव में मिल जाएगी, 15 से 20 हज़ार की नौकरी, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो या अगर उसको रोज़गार आपको वहीं पर मिल जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो अर्बन एरिया में आने की आवश्यकता यूथ को नहीं पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं अगर आपको कहूँ तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपकी डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन बहुत हुआ है। इस तरह का काम डेवलपमेंट के नाम पे भी हुआ, लेकिन उसको भरपाई नहीं हो रही। पूरा हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो हम 62.5 के करीब हिमाचल में जंगल है जो फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है, और वी आर लंग्स ऑफ पूरे नॉर्थ को हम ऑक्सीजन देते हैं। तो लेकिन उसका एक इम्पैक्ट, अगर ग्रीन कार्बन की बात करें तो हमको उसका कोई शेयर नहीं मिलता। तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप कितना केयर करने के बाद, चाहे वो MCA या गवर्नमेंट को कोई इसमें नहीं मिलता। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जब प्ले करते हैं तो उसको
उसके बदले में उसकी रख रखाव करने के लिए बहुत बड़ा इशू है। वाटर हार्वेस्टिंग पे हम काम करना जा रहे हैं हम स्ट्रांगली कि हर मकान जो बने उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है, एक पौधे का लगना बहुत ज़रूरी है, ग्रीन गार्डन या ग्रीनरी पे हमारे को काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम हवा पानी कैसे दे रहे हैं, क्या आप दे के जा रहे हैं, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक इसमें हर आदमी को आगे आने की भी आवश्यकता है, बड़ा एक ये मास मूवमेंट पे काम करने की आवश्यकता है। मैं अकेले मेरे करने से या दूसरे के करने से बोलने का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हम फ्यूचर में अब जो हमारी जनरेशन आएगी उसको किस तरह से हालात जो मैंने देखा, खासकर शिमला में क्लाइमेट चेंज इतना हो गया कि आपको यहाँ इतनी गर्मी और इतना, और मौसम क्लाइमेटिकली मौसम के हिसाब से जब बरसात होती बरसात वैसी नहीं होती, सर्दी का टाइम सर्दी में वैसी सर्दी नहीं हो पाती, उसको एक्सटेंड कर रहा है, एक महीना 1.5 महीना वो एक्सटेंड कर रहा है। हर एक मौसम रिवाइव कर रहे हैं बॉडियों को, 45 बाउरीज शिमला में, और हम पानी की बचत के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर अभी क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर को ही हम टॉयलेट भी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी। मान लो शिमला की 120 टॉयलेट्स हैं, एटलीस्ट अगर हम उनको बाउरी के पानी और टैंकर के थ्रू उसको भर दें और जो ड्रिंकिंग वाटर उसको प्लग करके उस पानी को बचाया जा सकता है। हमारे पास अराउंड 100 बीघा लैंड है जो हमने आइडेंटिफाई की वहाँ पे, जहाँ पे हमारा भरियाल में गार्बेज का प्लांट है, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं गार्बेज से, उसको लैंडफिल साइड को हम डेवलप कर रहे हैं, और साथ के साथ डंपिंग साइड भी। वहाँ पर हम बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का प्रपोजल है, जिससे हम लोकलिटी को भी बिजली वहाँ मिलेगी और सस्ती बिजली मिलेगी। और ओवरऑल गवर्नमेंट की स्कीम भी है सोलर एनर्जी पे। हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रहे हैं, तो उसको एक इन्वायरमेंट और पोल्यूशन फ्री करने का एक गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे करती है, काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलती है। प्लांट्स के तौर पर बड़े बड़े प्लांट्स मैंने लगाने, ब्यूटीफाई करना है, बालूगंज से लेकर छोटा शिमला तक उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ को बुला करके और सरकार के माध्यम से। तो एक सारी चीज़ें, और दूसरा जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसको भी हम थोड़ा अवेयर करने के लिए, आप यहाँ आए हैं शिमला को खूबसूरती को, हम उनको एक जूट का बैग और इसको ताकि प्लास्टिक का, हमारे यहाँ प्लास्टिक बैन है, लेकिन बहुत सारी आइटमों में प्लास्टिक तो यूज़ होता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा सा एक बैग उनको दें ताकि उसको बैग में वो गार्बेज उसी में, या चिप्स का पैकेट या दूसरी चीज़ अपने उसमें डाले, वो उसको डस्टबिन में प्रॉपरली डालें। मेरा ये एक मानना है कि जब तक हम अपने आप से शुरुआत ना करें किसी चीज़ को लेकर के, तो तभी ये सफाई को लेकर के या आपकी उसकी सुंदरता को लेकर कुछ ना कुछ ग्रीन शिमला क्लीन शिमला पे सभी लोग अपना सहयोग दें, तो ये एक अच्छा इवेंट रहेगा और हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए हम साफ़ सुथरा और स्वच्छ वातावरण दे करके जाएं। We are living in amidst disasters, और वो हमारा जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है वो बार बार हमें मैं नहीं कहूँगा डरा रहा है, लेकिन आगाह कर रहा है कि आप तैयारी रखिए, आप तबाही के आलम में जी रहे हैं और जीने वाले हैं। और उसकी वजह ये है कि हम जो जलवायु परिवर्तन, दरअसल प्लेनेटरी क्राइसिस है। वन इज़ व्हाट वी कॉल क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशंस है, और तीनों इंटीग्रेटेड हैं। दूसरा है जिसमें मैसिव लैंड यूज चेंज हुआ है, और तीसरा है जो बायोडाइवर्सिटी का फॉल है। ये तीनों इंटररिलेटेड है और हिमालय में तीनों बड़े साफ रूप से दिखते हैं। उनका मतलब ये है कि जो पहले हम तबाही देखते थे एक बार आती थी 100 साल में, अब वो तबाही आएगी 100 बार 100 साल में। तो हर साल तैयार रहे। पिछले साल यहाँ पर 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, 400 मौतें हुई थी। इस बार 1200 करोड़ का भी नुकसान हुआ है। तो ये करोड़ों में, लाखों में बात नहीं गई है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको छोटे समय में बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, और क्योंकि लैंड यूज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो हमारी जो पानी को रोकने की क्षमता थी वो घट रही है, और उस वजह से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, जिससे वो वैलीज़ में तबाही कर रहा है। और इसी तरह से जो पूरे ग्लेशियर मेल्ट भी हो रहे हैं, लेक्स टूट रहे हैं, तो वो वैली साइड जो है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आप मेरे से थोड़े अक्षरों में कहेंगे तो ज़रूरत ये है कि इससे डरना नहीं, ये मान के चलना कि तबाही आने वाली है, और ये मान के चलना कि इसका रास्ता जो है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस। मतलब आपको
जो इसका असर पड़ने वाला है, इससे आपको मुकाबला करने की ताकत आनी चाहिए। और ताकत आने के लिए चाहिए मतलब आपको प्रिपेयर्डनेस बहुत होनी चाहिए, जिसको हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं। और प्रिपेयर्डनेस में ये मतलब है कि एक तो लोगों को तैयार करें, अगर आ जाएगा तो कहाँ बचेंगे। दूसरा ये है कि थोड़ा सा मिटिगेशन स्टेप्स में कम से कम यार घर आप नाले में तो मत बनाओ, कम से कम आपको मालूम है जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पर तो आप घर मत बनाओ, कम से कम आप पहाड़ काट के तो आप रोड मत बनाओ, मतलब जिस तरह हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तबाही तो दिख रही है कि आएगी। तो वो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो शहरों में भी दिखनी चाहिए, और शहरों की जो योजना है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा विजन को बदलने की जरूरत है, तो हम थोड़ा सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं, अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। I think the conversation that we are trying to create now is that moving from just sticking on to the what was climate change, we're going into climate action. And when one talks about climate action, social justice is a very important aspect. Why so? Because in the population, our country has a population of 1.4 billion people, and hardly probably 10% of us have the means and the resources to address or make ourselves resilient towards climate change or any kind of weather extremities. And majority of the population is still very vulnerable. Amongst them, there are even more vulnerable groups like women, children, elderly, disabled people. And one has to, whatever action plans are created, one has to keep in mind that those action plans have to take into account the vulnerabilities of these people as well as make them equal stakeholder in the process. So it can't be like a very targeted kind of an approach where you say, okay, there is a climate action plan, and this is what has to be done for different communities or different sections of the society. It will not work like that. Social justice, and within social justice, what we are talking about is different aspects of it. So it is not just social justice at a very broad level, but we are talking about climate justice. So how climate would affect different sections differently. Gender justice, economic justice, spatial justice, intergenerational justice. So whether we are giving them a proper planet to habitate, what is the sustainability aspect there? So these different kind of justices have to be kept in mind, and only when they come together, we can really say that, okay, some aspect of social justice has been incorporated in climate change. I think this is what we are actually trying to do, and trying to create more and more awareness about the social justice aspect of climate change. The impact it will have on different communities, on our built environment, on flora and fauna of the state is also an important aspect which needs to be taken. We know now in what direction we are moving. So how to prevent these damages to our built environment? We can start, for example, providing insulation materials to our buildings. We can start having green walls. We can start having green certification of our buildings, which is very important, which which will check the negative impact on the ecology of the state. So these are some of the measures which we need to take with respect to Shimla, not only in Shimla but throughout Himachal. Highways are getting damaged, the hills are getting damaged, landslips are occurring. So we need to think that we need to see how we can leverage the technology to address this. Maybe we can have early warning systems. We can have geosensing, remote sensing. We need to have integrated development plans. We need to identify the vulnerable communities. We need to prioritize their needs, and we need to protect them from the impacts of climate change. Climate change will definitely make their life more difficult, more hard than what it is today. Climate change brings in a lot of problems with that. When temperatures rise, pollinators like butterflies, pollinators like bees reduce in number. When pesticides and chemicals are used, there are forest fires that are happening extensively. The entire thermal, map of the soil changes. With that goes the lichen, the microflora changes over there. We don't realize that plantations, extensive plantations of blue cheer pine,
that can change the feeling, the texture, the chemical composition, and the temperature of the soil. And they are then, literally inflammable. That somebody drops a matchstick, which is very common. Of course, Shimla has a policy of no smoking. But the minute you go out into the outdoors and somebody throws a bidi or a cigarette, and it can just explode like in a petrol pump kind of situation. So these are, and then with that, you realize that the snakes, the pikas, the lizards, those who are actually connecting the ecosystems, the dragonflies, the smaller cicadas that we are hearing, we have not even gone into discussion and looking into those things. We are yet looking at the macroscopic things, the leopards, the brown bears, the black bears, the larger species, mountain goats, etc. The ecosystem doesn't run on that. It runs on the smaller. It runs on the grasses, the babar grass. It runs on the balsams of the place. It runs on the jharnas, the small streams, and the micro mosses and lichens that are there. That is the food that makes creatures survive through the winter and wait till the spring. So when we make extensive changes, and when temperatures rise, when rainfall patterns change, when amount of snow that collects and stays in a place changes, that is going to cause a huge amount of change in the system. With that, you add layers of plastic into it, you add metal waste, you add, all sorts of styrofoam and other things that are there. That reduces the hydrology, that changes the hydrology, the amount of water that will seep inside. Now, there's been change, like in Shimla, for example, the entire boras forest, the entire Banj forest has gone, the oaks are gone. And you have, some bits of blue pine, but a lot of chir pine, deodars are also reduced. Some bits have deodars. So when that system changes, you'll find that even northern areas cannot collect as much of snow. That snow is very important because 400 million people are surviving. The Himalayas are literally the water, they provide the glaciers, and even these smaller streams, they feed into your Yamuna, they feed into your Ganga, they feed into the Bias, they feed into the Satluj. So, whether it is, going Pong Dam and further up, you'll see that Mashir populations are reducing now. Dams coming up on the lower areas, migrant fishes which used to come all the way from the sea up into the mountains, they are going. So having artificial projects of putting in trouts, rainbow trouts, etc., that changes the microecology of places. So we can't take a very macroscopic approach. So what is exactly happening is, with the rise in the temperatures, the trees, the flora is shifting upwards. But what happened to the species which are already at the top? They have nowhere to go. So this is one context. The other context beside this, if you, I work in the Trans-Himalaya of, that would be the cold desert area of Ladakh and Spiti, which we call the Sheet Marustal. If you look at, the changes are happening very fast. There's lots of, developmental activities. The Ladakh has got the UT Straters. As such, in there's a boom in, all around. If you see, when you see construction of dams, of buildings, of roads, so the flora, the native flora, is going to pay a heavy price. That is for sure. Now, what is happening is, like, for example, I was interacting with the traditional healers, the Amchis in Ladakh, with whom I'm doing a project on their, documenting their medicinal plants. So they say that what plants were earlier very easily available for them are very difficult to, get to. Even the population of these such species, because these species are very endemic, they are restricted to Ladakh, if you want to see, or the Spiti area. You will not get them anywhere else in the country. And mind you, the landscape may look very barren and desolate and very harsh climate, but still it is, I would say a hotspot of very rare medicinal plants, which are used in the traditional Amchi or the Tibetan system of medicine. Coming to Shimla, over the years, what happened last year, there were all around landslide, heavy rainfall. What the people would, and the government, the people, they started blaming that it was all due to the trees which are falling. But mind you, we need not blame the trees. It is us, the anthropogenic activities we are doing all around the town. We reduced the forest to mere trees, whereas I would say the forest is a sum total of, biodiversity. It includes your lichens, your fungi, your insect fauna, your herbs, your shrubs. So that makes a forest. And what we are making we're making just planting trees.
and tree itself is not a forest. We have been working for the last 20 years to develop sustainable cycling as an adventure sport in this pristine part of the Himalayas. We have done a lot of work for sustainable tourism and for development of cycling ecosystem in this part of the world. So our main activity features the promotion of cycling, like tours, cycling events, building cycling trails, building the necessary cycling infrastructure, and the backup that is needed to promote cycling as a tourism activity here in the Himalayas. As far as cycling is concerned, for the last 20 years, we have promoted cycling in a big way. We feel cycling tourism is a very sustainable tourism that would bring a lot of revenues for the state, a lot of revenues and employment to the stakeholders. And it is one of the best forms of an immersive, experiential tourism activity, adventure activity that one can pursue in a state like Himachal. And also the Himalayas, as we see, it offers a lot of opportunities for the cycling sustainable tourism. Himalayas is a very sensitive part of the world, and we need to promote activities which are in consonance with the environmental impact. Himachal as state and this part of the Himalayas as one of the most preferred destinations for cycling in the world. And we are in the process of developing the ecosystem for that, be it the trails, be it the cycling infrastructure and the support system that is needed for the avid traveler and the adventure seeker, so that the damage to the environment is minimized and we have a good, healthy environment and ecosystem in the times to come. There is a separate need of policies which needs to be built in. So we always talk about Swachh Bharat Mission Urban, Swachh Bharat Mission Rural. I think there should be a Swachh Bharat Mission Mountains, which should be then further, divided into urban and rural plus. So when we talk about the waste management problem in Himachal per se, so Himachal is generating around 370 tons of waste per day, right? And out of that 370 tons, the municipal assumption is that most of the waste is organic in nature, but the reality is different. You see a lot of tourists coming into Himachal, especially into Shimla, and most of the tourists are actually using products which are made of plastic, actually products which are inorganic contributors to the waste, right? So how to tackle with this problem? Dump site becomes one of the easy solutions for any of the municipalities. So whatever waste you are generating, you directly put it into a dump site and you forget about it. But that's not a long-term solution that also has a great environmental impact. So to tackle this, I think we do not need to look at legacy waste as a standalone thing. We always try to look at legacy waste as a problem of fresh waste. So any waste which is not dealt with today, tomorrow is going to become legacy waste for you, right? So when you are talking about waste, when you're talking about fresh waste, I think it's important to have a proper segregation mechanism in place. It's also important to understand the waste characteristics, right? Himachal majorly being a rural area, still has got the urban characteristics in waste. Why? Because a lot of tourists are coming in, right? From Delhi, from Chandigarh, from other parts of the country. Yeah? And one thing which Himachal has done really beautifully, specifically in Shimla, is they are able to actually come up with good solid waste management facilities. Now, there is still a big question whether these facilities are sustainable, whether, these facilities are operating properly. But I think the first step is already taken, right? So if the, municipalities, if the urban development department, if they put in a little bit more focus on, trying to contextualize the practices, the local practices, rather than going for heavy machinery, which might not be a best solution for the mountain areas, if they try to bring in, some local practices into the picture, if we try to reduce the consumption pattern, or reduce this, consumption pattern which is very prominent, if we try to build in the good EPR system, EPR is the Extended Producer Responsibility System, I think we have a long way and a good way to go ahead. And I think this problem can be dealt with very profoundly, very easily. अगर कचरे को इधर उधर फेंक दिया जाए तो उससे काफ़ी जो है जैसे एनवायरमेंटल चेंज स्टार्ट हो जाती है। से कभी जैसे हिमाचल प्रदेश है
शिमला है या कोई भी माउंटेनियस रीजन है, उसके ऊपर अगर कचरे को फेंक दिया जाए, मतलब इलीगल डंपिंग जिसको हम बोलते हैं, इलिसिट डंपिंग, उसको फेंकने से जब वो रेनफॉल होगी, या तो वो कचरा जो नालों में फंसेगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा, कुछ लोग उसमें टाई करके उसमें फेंक देते हैं, तो उसके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो भी उसको जो पोल्यूट करता है, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं, नालाज होते हैं, उसको पोल्यूट करता है। तो इस तरीके से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। कई बार कचरा मिक्स हो जाता है तो उस कचरे की जो क्लोरीफिक वैल्यू है वो थोड़ा कम आ रही है, जैसे 1800-2000 किलो कैलोरीज। तो हमारे को जो है उसको अगर जितनी ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू मिलेगी उससे उतनी ज़्यादा सिन गैस बनेगी। फिर वो सिन गैस को फीड करके उससे हम लोग क्या है कि भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर अनसाइंटिफिक डंपिंग होगी तो उससे कार्बन एमिशन होगा, तो वो क्लाइमेट चेंज को प्रस्तावित करेगा, बढ़ावा देगा। तो अगर हम साइंटिफिक डिस्पोजल करेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो उससे जो है हम क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उसको मिटिगेशन करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको रोक पाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो वेस्ट, अगर वेस्ट हैंडलिंग प्रॉपर हो गई, जहाँ से वेस्ट निकल रहा है अगर वो प्रॉपर हैंड्स में चले गया, प्रॉपर रिसाइकलिंग चेन में चला गया, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, अगर ये पानी में जाएगा, कचरा पानी में जाएगा नालों के थ्रू, तो पानी देखो कितना पंपिंग होकर आता है, उसमें कितनी एनर्जी लगती है। तो वहाँ भी हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्रेवेट करता है। तो इसलिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स हमारे सबको करना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि भाई अगर हम हम इंश्योर करें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स और उसकी हैंडलिंग प्रॉपरली करें। Wow, those interviews were truly eye-opening. It's clear that the Himalayas are facing a critical moment, but it's also inspiring to see the dedication and passion of those working to protect this region. Listeners, we encourage you to share your thoughts and ideas on our social media platforms using the hashtag #HimalayasMatter. Let's continue the conversation and work together to ensure a bright future for the Himalayas and our planet. Thank you for tuning in, and remember, every action counts.